प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें सिविक्स के क्वेश्चन लेकर भेज रहे हैं। इन्हें लिख कर कॉपी पर याद करें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ ए बॉडी ऑफ लॉ एंड रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। फिर है प्रेम्बल। व्हाट इज प्रेम्बल? इट इज़ द प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन एज वेल एज की टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है राइट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन रिपब्लिक एज स्पेसिफाई इन प्रेम्बल। द मेन objective of Indian preamble as following: sovereignty, a sovereign, socialist, secular, democratic. What is republic? Republic क्या है? Republic it is the state where the head of the state, a president, is popularly elected person for a definite or fixed period of time. It is opposed monarchy where the king is a hereditary ruler. Describe the role of the Constitution in democracy. Role of the Constitution. The Constitution is a set of law and rules as per which country is governed. It is a framework which decides the composition and function of a government. The Constitution of India lay down our national goals like democracy, socialist, secular, liberty, equality, fraternity, etc. It also lay down the power and function of government. It defines the rights and duties of the citizens and regulates our relation between the citizens and state. It performs the dual function of the regulating the government as well as safeguard the rights of citizens. It is our duty to respect our constitution. अगला लॉन्ग क्वेश्चन है सेकंड, एक्सप्लेन मेन आइडियाज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेन आइडियाज आपके हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब हैं, लेकिन आपको हमने 4 लिखे हैं। इसमें सॉवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, लिबर्टी क्या है। कहते हैं सॉवरेन में इट इज़ सॉवरेन स्टेट, इंडिया इज सॉवरेन स्टेट विच हैव ओन रूल्स एंड लॉ. इट इज़ नो डिपेंड एनी एक्सटर्नल पावर. Socialist, it means that the state policy should be designed so as serve the welfare of the people as a whole. Secular, it means that the state or country no faith any religion या official religion as official. All person may keep any religion, that is all person or citizen have the freedom to profess, practice or propagate any religion which they deem fit to like. Liberty, all person our citizen are free and take decision of their life. They are free to express their ideas and follow their beliefs without fear. इतना आप ये पढ़ करके लिखें, देख कर समझ कर समझ में आए पूछ भी सकते हैं।